अगर आपका आलू का पराठा फट जाता है या बिल्कुल ढाबे जैसा नहीं बनता, तो आज की ये ट्रिक देखने के बाद हर बार बनेगा एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट और क्रिस्पी। चलिए सबसे शुरू करते हैं हम आलू के पराठे की रेसिपी। इस वीडियो में मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स दे दी है और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हैं कि क्वांटिटी मैंने वहां पर भी दी हुई है। तो बस वीडियो देखिए और रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आलू के पराठे किसे पसंद नहीं होते। तो आई होप आपको यह रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे घर में आलू के पराठे सबको बहुत अच्छे लगते हैं। तो प्लीज़ एक बार वीडियो देखकर ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंजॉय कुकिंग।